Okay, assalamu alaikum everyone. I was just setting a couple of things up. I think it's working now. So in this session, we are going to start this. We're going to do this paper, November 2020, paper 1, variant 1. That's what we are planning for this session. Now, before we begin, let me just remind you that our time for our regular sessions is not going to be the same anymore. We're not going to have have our classes at 10:45 p.m. that we used to have earlier. We're going to change the time now. ठीक है? अब time exact कल तो class नहीं होगी ईद वाले दिन, but after that, from the day after tomorrow, we will actually be changing our time. It's most likely going to be sometime around 8:30 or 9:30 p.m. Okay, so थोड़ा सा early shift कर लेंगे. That's when we are going to be starting our classes. And also, before we start here, let me just remind you that you have a lot of quick revision videos available here on this playlist that I'm just posting in the chat here. Most of the P1 topics that are covered here, unko aap matlab 20-30 minutes mein you can quickly revise, quickly go over the concepts that you need to know about. So that's going to be very helpful for last minute revisions. Make sure that you go through them before the exam ones, especially a couple of topics जिनमें लोगों को ज़्यादा मसला होता है. That is equation of circle. Make sure that you have a look at that. Functions की domain or range वाला part in particular. Quadratic से कुछ questions and आप देखेंगे उस quick revision वाली video के बिल्कुल end पे there are a couple of questions that you should have a look at, and trigonometry. ठीक है, so these are few things that you should definitely have a look at. You've got those available in the link here. मैंने यहाँ पे post किया. Let's begin with our paper now. We are starting October-November 2020, paper 1, variant 1. Okay, let's begin with this. All right, so first of all, we have to find the set of values of m for which the line with equation y equals mx minus 3 and the curve with equation y equals 2x squared plus 5 do not meet. Now, if there are two graphs that do not meet each other, and one of them is quadratic and the other is linear, if we've got a situation like this, what do we say about it? If they do not meet each other, इसका मतलब ये होगा your discriminant, that's b square minus 4ac, that is going to be less than 0. Discriminant आपका negative होगा. तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इस discriminant को use करने के लिए? We will have to convert our equation to this form, ax square plus bx plus c equals 0. और उसके लिए क्या करेंगे? Since we are talking about the points of intersection, कि उनका कोई point of intersection नहीं है इन दोनों graphs का, तो point of intersection कैसे find करते हैं? हमारे पास ये दो equations हैं, इनको equate कर देते हैं. So we have y equals 2x squared plus 5, we take 2x squared plus 5 from that, and the other equation is mx minus 3, we equate that to mx minus 3. That's the process that we generally follow for solving equations simultaneously. हम ये वाला process follow करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? Discriminant को less than 0 input कर देंगे. So let's convert it to this form first. सब कुछ left पे ले जाए. 2x square minus mx plus 5 plus 3, that's going to be plus 8 equals 0. And now we use that, b square minus 4ac should be less than 0. Now what's b here? B is minus m ka whole square minus 4 into 2 into 8. That is less than 0. That gives us m square minus 64 less than 0. And that gives us m square less than 64. What do we do at this point? हम इसको क्या करते थे? जब भी आपके पास quadratic inequality आ जाती है, what you do is you treat it as an equation and find the x-intercepts first. ठीक है, इसको as an equation treat कर लें पहले. Let me actually just do it at this point. M square minus 64 equals 0. What does that give you? That gives you m square equals 64 and m equals plus minus 8. ये आपके पास दो points आ गए. These are the points where this graph meets the x-axis. इसका जो graph होएगा, इसकी बात करें, m square minus 64, इसका graph जो होगा, it's going to meet the x-axis at these 2 points, which are minus 8 and plus 8. Now, what is this equation? What does this inequality tell us? M square minus 64 should be less than 0. तो हम इस graph पे क्या देख रहे होंगे? The region of the graph that is below the x-axis, जो negative part है, उसमें आपके values क्या बन रही हैं? -8 और 8 के दरमियान में. This is the region
that satisfies this condition. Okay, m square minus 64 is negative. Minus 8 to 8 ke darmiyan mein. So what do you say then? M should be between minus 8 and plus 8, and that should be the solution. Because aapko m ki set of values find karni thi, and you found them here. Okay, that's the first question. Okay, let's move on to the next question. Question number 2, the equation of a curve is such that dy over dx equals 1 over x minus 3 whole square plus x. It's given that the curve passes through the point 2, 7. Find the equation of the curve. Aapke paas ye derivative given hai, dy over dx given hai. You've got to find the equation of the curve. क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे. आपके पास एक प्लस सी आ जाएगा. जो प्लस सी होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए आप ये पॉइंट इनपुट कर दोगे. You'll find the value of c from there. ठीक है, let's do that. You've got dy over dx that equals 1 over x minus 3 whole squared plus x. We want to integrate this. अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले इसको पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. It becomes dy over dx equals x minus 3 whole raised to power minus 2 plus x. तो पहले इस डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर के अंदर, और फिर हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं. इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? We will increase the power by 1. So इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या करें? इसमें 1 ऐड कर दें. It gives you x minus 3 whole raised to power minus 2 plus 1. That is minus 1. What's the derivative of x? अच्छा, उससे पहले हम क्या करें? हमने पावर इंक्रीज कर दी, फिर और क्या करना है? पावर से डिवाइड करना है. इंक्रीज पावर से डिवाइड करना है. -1 से डिवाइड कर दिया, and also divide by the derivative what is inside the brackets. x minus 3 का derivative क्या होता है? It's just 1. So we can divide by 1 if you want, or you can just ignore that. That's what we get. ठीक है. Plus x का integral, that is x square over 2, and then we have a plus c over after that. ठीक है, ये plus c आ गया. Let's simplify this. Simplify करें, हमारे पास क्या आ जाता है? We get -1 over x minus 3 plus x square over 2 plus c. ये आपके पास इंटेग्रल आ गया. अब क्या करेंगे? आपको पॉइंट दिया हुआ है. You're going to input that point there and find the value of c. Okay, ये पॉइंट इसके अंदर इनपुट कर दे. What do you get from that? 7 equals -1 over 2 minus 3 plus 2 square over 2 plus c. यहाँ से आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी. Let's see what we get from this. We have -1 over -1 here, plus 2 square over 2, that's plus 2, plus c. 7 equals 1 plus 2 plus c. The value of c turns out to be 4 from here. c की वैल्यू 4 आ गई. अब जो ऊपर हमारे पास वो फंक्शन आया था उसके अंदर c की वैल्यू वापस इनपुट कर दें and you'll get your function. ठीक है, so y equals -1 over x minus 3 plus x square over 2 plus 4. That's the function that we were looking for. ये हमें चाहिए था. All right, I hope that makes sense. Okay, walaikum assalam, Danish. Yeah, if you have a question, you can post there. That's when I usually respond to chat. If you have specific questions, you can let me know. किस स्टेप की समझने हैं? यहाँ पे हम सिर्फ क्या किया? हमने इंटीग्रेट कर दिया था. इसको इंटीग्रेट करने के बाद all we're doing is we're just inputting the point that we were given there, 2, 7. हमने पॉइंट इनपुट कर लिया, c की वैल्यू फाइंड कर दी, और उसके बाद हमने उसके अंदर इनपुट कर दिया c. ठीक है, कोऑर्डिनेट्स इनपुट करने से पहले सिर्फ इंटीग्रेट किया. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट, यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स एंड अंडरस्टैंड इंटीग्रेशन. इस इंटीग्रेशन का सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है. There isn't really much complexity there. Let's move on. Air is being pumped into a balloon in the shape of a sphere so that its volume is increasing at a constant rate of 50 centimeter cube per second. Find the rate at which the radius of the balloon is increasing when the radius is 10 centimeters. Okay. Acha. So what are we given? Volume is increasing at a constant rate of 50 centimeter cube per second. That's the rate of increase of volume. How do we write that? We say this is dV over dt, rate of increase of volume. That is given to be 50.
ठीक है, rate of increase of volume is 50 and it's a sphere. Okay, sphere की shape है. We have to find the rate at which the radius of the balloon is increasing when the radius is 10 centimeters. Okay, radius का आपने rate of increase find करना है, dr over dt, that's what we want. When r equals 10, जब r की value 10 है, उस point के ऊपर आपने rate of increase of radius figure out करना. ठीक है. Now this is actually interesting because normally पहले क्या होता था, they used to give us the volume of sphere formula, लेकिन यहाँ पे उसने volume of sphere formula नहीं दिया हुआ. तो हम क्या करेंगे, we basically have to remember that formula. Remember आपका sphere का volume क्या होता था, sphere volume of sphere is given by v equals 4 over 3 pi r cube. ये हमारे पास volume of sphere का formula होता है. Now what we can do is we can use the chain rule here. We know dv over dt. We want to find dr over dt. अगर हम यहाँ से dv over dr निकाल लें तो हम chain rule use कर सकते हैं. ठीक है, let's figure this out. v का derivative ले लें. What do we get from this? dv over dr. 4 over 3, that's the constant, that stays as it is. Pi be constant, and that also stays as it is. R cube का derivative क्या होगा? You multiply by 3. Power से multiply कर दिया. Power में से 1 minus कर दिया. You get r squared there. That gives you 4 pi r squared. That's dv over dr. Okay. Yes, Emma, that's good. Volume sphere का formula क्या है? That's 4 over 3 pi r cube. Now we differentiate that. उसका derivative हमारे पास आ गया 4 pi r squared. Now once we've got the derivative, all we have to do is we have to use the chain rule now. dr over dt, that's what we want to find. dr over dt हमें figure out करें. ठीक है. How can we use the chain rule here? जो आपके पास first expression है वो यहाँ पे numerator में आ जाएगी first fraction के. ये second है नीचे, वो second fraction का denominator बन जाएगा. And then the third thing is going to come here in these two places. The third is volume. So we have dv here and we've got dv here. That's the chain rule. अच्छा, dv over dr, यहाँ पे हमारे पास dr over dv है, तो क्या करेंगे, इसका reciprocal लिख देंगे. This is going to be 1 over 4 pi r square into dv over dt, that's going to be 50. ये आपके पास आ गया. अब उसने किस पॉइंट पे पूछा था, उसने एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आपसे dr over dt पूछा था, तो आप क्या करोगे, वो पॉइंट इनपुट कर दोगे. What's that point? That point is when r equals 10. So you're going to input that here. We say let's input r equals 10. r equals 10 input किया, हमारे पास आ गया dr over dt, that equals 1 over 4 pi into 10 squared into 50. You can evaluate this and you'll get the rate of change of the radius. Oh, sorry about that. ये हमारे पास क्या आता है, let's figure this out. 50 divided by 4 divided by 100. And that's giving me 1 over 8. And then we've got pi in the denominator as well. Let's go see terms which hold pi की terms में. I'm getting 1 over 8 pi. That's dr over dt. Okay. Yes, r was 10, तो मैं r वहाँ पे 10 input कर दिया. Okay, so that was pretty straightforward as well. Simple application of the chain rule. Start में बहुत simple questions है. Let's move on to the next one now. Okay, this is question number 4. It says in the diagram, the lower curve has equation y equals cos theta. So this is the lower curve. इसकी equation उसने बताई है. This is y equals cos theta. The upper curve shows the result of applying a combination of transformations to y equals cos theta. Find in terms of a cosine function the equation of the upper curve. Okay, that's interesting. Yes, Bakir, that's okay. So you could write it as a decimal if you wanted. You can come 3 significant figures likhne honge par, or you could leave it in exact form like this. Okay. Now this is interesting. ये question काफी लोगों को बहुत tricky लगते हैं इस तरह के, जहाँ पे आपको transformations figure out करनी होती है graph से. Now how do we think about this? We've got to find the equation of this curve thinking of transformations. Now देखिए नीचे वाली curve के ऊपर क्या-क्या transformations हो रही हैं. Let's think of vertical transformations first. Vertically क्या change आ रही है? Vertically remember सबसे पहले हम किसका सोचते हैं? Vertically सबसे पहले किसका सोचते हैं? Vertically सबसे पहले हम सोचते हैं stretch और reflection का. That's the first thing that we always think about when we
are looking for vertical transformations, पहले stretch और reflection का सोचेंगे, उसके बाद translation. सबसे पहले stretch और reflection. अच्छा. Now, if you look at the original graph, what's the overall height of the graph? It's 2 units. Or you can think of the amplitude. The amplitude of the graph is 1 unit. या पूरी height जो है graph की, that is 2 units. If you think of the graph that's there after the transformation के बाद क्या होगा? Transformation के बाद हमारे पास height कितनी होगी total? 4. Or if you think of the amplitude, that's basically 2 now. तो हर चीज क्या हो गई है? 2 से multiply हो गई है. 2 से multiply हो गया. Ahmed, you were right earlier. Vertical transformations के अंदर जो stretch factor होता है, आप as it is उसी number से multiply कर रहे होते हैं. What you were trying to do is what happens in horizontal transformations. Horizontal transformation उसका reciprocal हो जाता है. Vertical के अंदर देखें 2 से multiply कर रहे हैं आप अपनी height को. Vertical आपकी stretch है. You can write that here. There's a vertical stretch with scale factor 2. एक चीज ये हो रही है. What that means is जो cos theta था, cos theta उसके बाहर एक 2 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा. एक चीज तो ये हो रही है, 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, स्ट्रेच हो गई आपकी. Now think about this. After you've stretched the graph, आपका ग्राफ कहाँ पहुंच चुका होगा? ये इधर 2 पे चला जाएगा, ये 2 से स्टार्ट होएगा, जहां में -1 पे था उधर -2 पे चला जाएगा और वापस इस तरह आ जाएगा. इट्स गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस. स्ट्रेच करने के बाद अब ग्राफ कुछ इस तरह का लगेगा, ठीक है, इस साइड पर ऊपर और इसी तरह से राइट साइड के ऊपर. स्ट्रेच करने के बाद दिस इज हाउ योर ग्राफ इज गोइंग टू लुक लाइक. ओके, आफ्टर यू हैव स्ट्रेच्ड द ग्राफ. अब क्या है, इसके बाद आपने देखना है आपकी और मूवमेंट भी हो रही है, और भी तो वर्टिकली मूव कर रहे हो. अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर एक तरीका सोचने का क्या होता है, आप देख लें बेसलाइन आपकी कहाँ पे जा रही है. दिस इज द बेसलाइन. ये बेसलाइन ओरिजिनल फंक्शन की थी. व्हाट अबाउट द ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन, उसकी बेसलाइन कहाँ पे चले गई है? ये आपका पूरा ग्राफ है, इसका मिड पॉइंट पे बेसलाइन होगी, यहाँ पे बेसलाइन है 3 के ऊपर. बेसलाइन आपके ऊपर चले गई है बाय हाउ मेनी यूनिट्स? इट इज मूव्ड अप बाय 3 यूनिट्स. 3 यूनिट्स आपका ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया. इट इज ट्रांसलेटेड बाय 3 यूनिट्स अपवर्ड्स. Vertical transformation. It's a vertical translation 3 यूनिट्स अप. ये आपकी वर्टिकल ट्रांसलेशन हो रही. तो क्या करेंगे, फंक्शन के बाहर 3 ऐड कर देंगे. दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी डू वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशंस. वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन से हमारा ये हो गया, ठीक है. ये 2 चीजें हो गई. व्हाट एल्स? अब देखते हैं हॉरिजॉन्टली क्या हो रहा है. थिंक अबाउट व्हाट्स हैपनिंग हॉरिजॉन्टली. ओरिजिनली द ग्राफ इज कंप्लीटिंग one cycle in 2 pi and then another cycle in the next 2 pi. तो टोटल आपके 2 cycles आ रहे हैं. After transformation, you've got only 1 cycle. तो क्या होगा, आपका पहले 1 cycle था, बाद में हाफ साइकिल हो गया. अगर यहां तक देखें 2 pi का, 0 से लेकर 2 pi तक, we earlier had 1 cycle. Now we've got only 0.5 cycle, half cycle बाद में हो रहा है. तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, जो हमारे पास अंदर जो वेरिएबल होगा थीटा के बजाय क्या हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बी 1/2 थीटा. That's one way to think about this. The other idea is that you think of the period of the graph. पीरियड को देख लें ग्राफ के. आपका पीरियड पहले क्या था, 0 से लेकर 2 pi में आपका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा था. पहले 0 से लेकर 2 pi तक आपका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा था. ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या हुआ है, पीरियड आपका डबल हो गया. नाउ इट्स 4 pi. ट्रांसफॉर्मेशन के बाद पीरियड हैज बिकम twice as compared to what it was before. जब पीरियड डबल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशंस में उल्टा होता है, रिमेंबर. तो ये अंदर थीटा से हम क्या करेंगे, थीटा को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ. ओके, तो यहाँ पे आपकी जो हॉरिजॉन्टली क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टली बेसिकली देयर इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच
और उसका स्ट्रेच फैक्टर क्या है? स्ट्रेच फैक्टर वहां पे भी 2 है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में क्योंकि वी डू द अदर वे अराउंड, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अंदर अंदर हम 2 से डिवाइड कर देंगे, राइट? सो you should understand that if you have your transformation concepts correct. वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर स्ट्रेच फैक्टर जो होता है वही उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो स्ट्रेच फैक्टर होता है उससे हम बेसिकली उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, या उससे आप कह सकते हैं डिवाइड कर रहे होते हैं। तो आपके पास ओवरऑल फंक्शन अब क्या बन जाएगा? बाहर वाली ट्रांसफॉर्मेशन तो यही थी, 2 cos of whatever was inside plus 3. Under the transformation, horizontal transformation, that's going to be half theta here. That's what your function turns out to be. ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है? This is your final function. This is the equation of the transformed curve. All right, let's move on. अब इसमें आपको वर्किंग कोई शो करना जरूरी नहीं है, आप खुद से दिमाग में सोच के कर सकते हो। इसमें सिर्फ आंसर के मार्क्स हैं, ये आंसर लिखने के मार्क्स हैं सिर्फ, ठीक है? इसमें आपके 1 मार्क इसका आएगा, 2 का, सॉरी 1 मार्क आपके पास आपको 2 का मिलेगा, 1 मार्क इसका थीटा ओवर 2 का मिलेगा, 1 के प्लस 3 का मिलेगा, ठीक है? ओके, let's move on to the next one. This is question number 5. This is binomial now. In the expansion of 2x squared plus a over x whole raised to power 6, the coefficients of x raised to power 6 and x cube are equal. Find the value of the non-zero constant a. x raised to power 6 और x cube के coefficients उसने बता दिए equal होते हैं, ठीक है? Now, the way I do it is, rather than using any term formulas or anything, it's going to be much easier if you just use the normal expansion formula. Otherwise, आपको x raised to power 6 का अलग से निकालना पड़ेगा, x cube का अलग से निकालना पड़ेगा. You can just do simple expansion. Expansion formula क्या होता है आपके पास? a plus b whole raised to power n. That equals a raised to power n plus nc1 into a raised to power n minus 1, b plus nc2 into a raised to power n minus 2 b square, and so on. ये आपके पास formula होता है, formula sheet में given होता है. You've got to use that formula to expand this thing now. 2x squared plus a over x whole raised to power 6. A की जगह पे we've got 2x squared, and in place of b we've got a over x, and in place of n we've got 6. ये values बस formula के अंदर input कर देनी है. A raised to power n, that means 2x squared whole raised to power 6. That's the first term. Plus nc1, that's 6c1. A is 2x squared whole raised to power, अब power आपकी कम होती जाएगी इसकी 5 into b की जगह पे क्या रखा हुआ है हमारे पास? a over x. So you've got a over x here. Now what you can do is you can just think of the pattern that these powers are making, ताकि आपको पता चल जाए आपको वो दोनों terms कहाँ पे मिलेंगी, x raised to power 6 and x cube. First term देखें, इसमें x की power क्या आ रही है आपके पास? x square and then x raised to and then 6. This is basically x raised to power 12. 2 into 6 क्या मिल जाएगा? That's x raised to power 12. Second term क्या है? 2 into 5 10 and then divided by x 10 minus 1. That is, this term has x power 9. ये x power 9 वाली term है. अब देखिए हमेशा ये AP sequence को follow करती हैं powers. First 12 है, second 9 है, तो next क्या आना चाहिए pattern में? Next term आपकी होगी x raised to power 6 और उससे next होगी x cube, and those are the two terms that you need. आपको वही 2 terms चाहिए. So let's expand this a bit more. 2 terms और find कर लें, and then we'll get those terms. Okay. What's the next one now? 6c2. 6c2 into 2x squared whole raised to power 4 into a over x whole raised to power 2. ये आपको x power 6 वाली term मिल गई, plus 6c3 into 2x squared whole raised to power 3 and a over x whole raised to power 3. हमें ये 2 terms चाहिए थी सिर्फ, जो हमारे पास x raised to power 6 और x cube दे रही हैं. बाकी को simplify करने की जरूरत नहीं है. अब आप सिर्फ इन दोनों को उठा लें यहाँ से, इनको simplify कर दें. You can just ignore everything else. बाकी सब कुछ ignore कर दें. 6c2 क्या होता है आपके पास? 6c2 क्या होता है? 6c2 is 10
No, I think it's 15. 62 is 15. Into 2x square whole raised to power 4. 2 raised to power 4 is 16. X raised to power 2 raised to power 4, that is x raised to power 8. And then a square over x square. Plus 63, that's 20. Into 8x raised to power 6 into a cube over x cube. And that's all you need to do here. अब इसको simplify कर लें. आपके पास क्या आ जाता है? 15 into 60, what's that? That's going to be 240. A square. And you can see this is x power 8, this is x power 2. ये क्या बन जाएगा? X power 6. 20 into 8, that is 160 into a cube into x raised to power 6 minus 3. That's going to be 3 as well. ये आपके पास दो टर्म्स आ गई. एक आपके पास आ गया 240 a square, दूसरा आ गया 160 a cube. ये आपके x raised to power 6 और x cube के कोएफिशिएंट्स, x power 6 और x cube के कोएफिशिएंट्स है. हम क्या करेंगे? आप सिंपली इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, बिकॉज उसने ऊपर यही कहा हुआ था that these two things are equal to each other. This thing here and this thing here, they are equal. इन दोनों को इक्वेट कर दें. We have 240 a square equals 160 a cube. a उसने बताया 0 तो हो नहीं सकता, तो आप क्या कर सकते हैं? इसको डिवाइड कर सकते हैं. वहां पे आपके पास क्या आ जाएगा? a equals 240 a square divided by 160 a square. The value of a turns out to be 240 over 160, which is 1.5. ये आपके पास a की वैल्यू आ गई 1.5. That's what we were looking for. So 1.5 लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं. That's your choice, because ये exact number ही आ रहा है in any case. That's your value of a. That's what we wanted. All right. Let's move on to the next one. It says find the coefficient of x raised to power 6 in the expansion of this thing. X power 6 का coefficient चाहिए हमें. Now we've already done this expansion. ये expansion तो हमने कर लिया. इसकी दो टर्म्स हमने निकाली थी, एक x raised to power 6 और x cube वाली term. Now let's think about this. Let's write down this thing first here. क्या आ रहा है हमारे पास? 1 minus x raised to power 3 into 2x square plus a over x whole raised to power 6. What do we need to multiply 1 by to get x raised to power 6? 1 को किससे multiply करेंगे? 1 को हमें multiply करना पड़ेगा इसके अंदर x power 6 वाले टर्म के साथ. x cube को किससे multiply करना पड़ेगा? x cube को multiply करना पड़ेगा x cube वाली टर्म से. तो हमें यही दो टर्म्स चाहिए, सिर्फ वहां से x raised to power 6 वाली टर्म चाहिए और x cube वाली टर्म चाहिए. That's all we need there. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 1 को मल्टीप्लाई कर दें x पावर 6 वाली टर्म के साथ. वो दोनों टर्म्स पहले लिख लें यहाँ पे. 1 minus x cube into 240 a square x raised to power 6 plus 160 a cube x power 3. हमें सिर्फ यही दो टर्म चाहिए. हमने ये फिगर आउट कर लिया था. x पावर 6 टर्म चाहिए, x क्यूब टर्म चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा. लेट्स मल्टीप्लाई. क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म के साथ और माइनस एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म के साथ. Let's see what we get from that. 1 into 240 a square x raised to power 6, that's going to be 240 a square x raised to power 6 plus minus x cube into this thing. ये आपके पास क्या आ जाएगा? Let me just do it directly. It's going to be minus 160 a cube x raised to power 6. ठीक है, अब a की वैल्यू इनपुट कर दें इसके अंदर. a की वैल्यू क्या थी? 1.5. Let's input that here. We get 240 into 1.5 का square x raised to power 6 minus 160 a cube, which is 1.5 का cube
into x raised to power 6. If we evaluate these two things, let's see what that's going to give us. 240 into 1.5 ka square, that is 540 x raised to power 6. 160 into 1.5 cube, that's also 540 x raised to power 6. So basically cancel ho jata hai sab kuch, and what we end up with is 0. हमें 0 मिल जाता है. That's our final result. So basically x power 6 का coefficient जो है, that's nothing, that's basically just 0. वो cancel out हो रहा है सब कुछ. ठीक है? That's what we wanted here. I don't know why it was 1 mark only, because it did require some working. Anyway, let's move on. Now it says the equation of a curve is given by this. Find the coordinates of the point on the curve at which the gradient is 4/3. Gradient क्या होता है किसी curve का? It's dy by dx, right? The derivative of that. तो आप क्या करें? Derivative find कर लें. उसको 4/3 से equate कर दें. That's all you've got to do there. Let's find the derivative. उसके लिए हम पहले power form में इसको लिख लेते हैं. This is y equals 2 plus 25 minus x square whole raised to power 1/2. Let's find the derivative. dy over dx. That equals 2 का derivative 0 हो गया. 25 minus x square की power 1/2, उसका derivative क्या हो जाएगा? 1/2 into 25 minus x square whole raised to power minus 1/2. And then the derivative of what is inside the brackets. 25 minus x square का derivative. 25 का 0 minus x square का derivative minus 2x. Got minus 2x here. Now we put the derivative equal to 4/3 and then just solve that equation. 4/3, that equals, this gets cancelled. You're left with minus x divided by 25 minus x square whole raised to power 1/2. That's the equation that we're getting here. अब इस equation को solve कर लेंगे और x और y की values figure out कर लेंगे. ठीक है, let's do that. There's azan going on here. I'll just take a 1-minute break and then we'll resume after that. Okay, just a 1-minute break and then we resume after that.
Okay, let's resume this. So we want to solve this equation. 4 over 3 equals minus x over 25 minus x squared whole raised to power 1 over 2. So what can we do here? We want to get rid of this power. दोनों sides को square कर लें. Let's square both sides. Let's square this side and also square this side. What do we get from this? 16 over 9. That equals x square. Remember, ये minus sign खत्म हो जाएगा square करके. Denominator में हमारे पास आ गया 25 minus x square. Let's cross multiply. 16 into 25. What is that going to give us? Let's evaluate this. 16 into 25. That's 400. 400 minus 16x squared. That equals 9x squared. And that gives me 25x squared equals 400. X squared equals 16. ठीक है, x squared 16 आ गया. Now x equals plus minus 4 because whenever we take square root we put both plus and minus. ठीक है, x equals plus minus 4. अब ऊपर जाके देखते हैं क्या दोनों वैल्यूज कंसिडर करेंगे या सिर्फ एक वैल्यू कंसिडर करेंगे. x की वैल्यू हम क्या लेंगे? At which the gradient is 4 over 3. What value of x can we use here? Let's think about this. Plus minus. अच्छा उसने एक तो उसने कहा of the point, so it has to be only one point. We can't have multiple points. दोनों में से एक वैल्यू सिर्फ चूज करनी है. अच्छा अगर हम इनपुट करें इसके अंदर अगर हम -4 इनपुट कर दें और 4 इनपुट कर दें, y की वैल्यू तो दोनों पे सेम आती है, so that's not a problem. y के अंदर दोनों इनपुट कर सकते हैं, that's not an issue. What about the derivative? Derivative में अगर हम यहाँ पे इनपुट करें कोई x की वैल्यू, let's say x की वैल्यू अगर हम 4 इनपुट कर दें, x की वैल्यू 4 इनपुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? x की वैल्यू 4 इनपुट करेंगे तो हमें मिलेगा -4 divided by 25 minus 16 whole raised to power 1 over 2. And that makes sense. That is okay. यहाँ से हमारे पास ये आ रहा है 25 minus 16 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया फिर? It's going to be 4 over 3. अगर हम x की वैल्यू 4 इनपुट करते हैं तो हमें ये मिलता है. So x की वैल्यू अगर हम 4 इनपुट करते हैं तो we basically get this. Yeah. When we put x equals 4, the gradient turns out to be -4 over 3. लेकिन वो तो 4 over 3 होना चाहिए था. If we input x equals -4 instead, अगर -4 इनपुट करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? -4 minus into -4 divided by 25 minus 16 whole raised to power 1 over 2, and that's going to give us 4 over 3. तो x equals -4 input करने से हमें 4 over 3 gradient मिलता है, which is what we want. x equals 4 input करने से हमें -4 over 3 मिलता है, which is not what we want. तो हम कौन सी x की वैल्यू चूज करेंगे? यहाँ पे हम x equals -4 इनपुट करेंगे, यहाँ पे वो वाली वैल्यू चूज करेंगे, राइट? सो that's important. आप यहाँ पे कौन सी वैल्यू इनपुट करोगे? आप ये वाली वैल्यू चूज करोगे, that is -4. The reason for that, x equals -4 gives dy over dx equals 4 over 3. x equals -4 पे ये आता है, x equals 4 इनपुट करते हैं तो gradient different आ जाता है. So that's why we should be using x equals -4 here. That's the x coordinate that we were looking for. इसका एक मार्क होगा या प्लस माइनस डिसाइड करने का. So this is very important. ये मसला क्यों हो रहा है? Remember हमने डिस्कस किया है, जब भी हम स्क्वायर करते हैं ना कुछ किसी फंक्शन को खुद से, तो उसमें एक्स्ट्रा आंसर्स आने का चांस होता है. तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आ रही थी, x equals +-4, +4 does not satisfy, -4 satisfies, तो हमने -4 यहाँ पे चूज किया. ठीक है. Now you can find the corresponding value for y there. y के अंदर इनपुट कर दें. It's going to be y equals 2 plus
25 minus -4 whole square whole raised to power 1/2. इसके अंदर इनपुट कर दिया. Let's see what that gives us. 2 plus 25 minus 16, that's going to be 9 raised to power 1/2, and that's going to give us 5. 2 plus 3 आपके पास 5 आ जाएगा. Y की वैल्यू ये आ गई. तो हमें क्या चाहिए था? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट at which the gradient was 4/3. तो कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या हो जाएंगे? They're going to be -4 and 5. These are the coordinates that we were looking for. All right. Okay, good. Let's move on to the next one. Now, this was actually a bit tricky. Choosing the sign, so make sure that you understand that. हमने चेक किया जाके डेरिवेटिव के अंदर कि किस पे हमें 4/3 डेरिवेटिव मिल रहा है. एक पे -4/3 मिल रहा था, वो हमने इग्नोर कर दिया. ठीक है, उसका एक मार्क था. Let's move on. Now we've got this trigonometric equation, trigonometric identity. In fact, identity proof करनी है आपको. Let's do this. Sine theta over 1 minus sine theta minus this thing. It should be equal to 2 tan square theta. Left side से start करते हैं because that's more complicated. We could take LCM because आपको fraction को खत्म करना है. Let's take LCM and see what that gives us. 1 minus sine theta into 1 plus sine theta. That's what you got in the denominator. In the numerator, we're going to have sine theta into 1 plus sine theta. इधर के उधर multiply होगा, इससे multiply हो जाएगा. Minus sine theta into 1 minus sine theta. All right, let's simplify this. We get sine theta plus sine square theta minus sine theta plus sine square theta. That's what we get in the numerator. Denominator में देखें हमारे पास क्या आ रहा है? 1 minus sine theta into 1 plus sine theta. हमें n पे tan square theta चाहिए. So what we want is we want sine in the numerator and then cos in the denominator. हमें पता sine over cos जो है वो क्या बन जाएगा? वो tan बन जाएगा. So denominator में हम क्या कर सकते हैं? We can simplify this. इसको simplify करेंगे तो क्या मिल जाएगा? It's a minus b into a plus b. It's going to be a square minus b square. That's 1 minus sine square theta. Now, how does that help? In the numerator, we're going to have sine theta and sine theta cancelled, and we're going to be left with 2 sine square theta. अब denominator में 1 minus sine square theta की हम क्या लिख सकते हैं? 1 minus sine square theta की जगह हम लिख सकते हैं cos square theta. And then sine square over cos square, that equals tan square. We get 2 tan square theta. That's equal to the right hand side. ये आपके पास आ गया. ठीक है? Order of transformation, बेटा stretch vertical transformation जो होती है ना, उसमें आप stretch reflection पहले करते हो और translation बाद में करते हो. और जो horizontal transformation होती हैं उसमें आप translation पहले करते हो और stretch reflection बाद में करते हो. That's what happens when you've got multiple vertical transformations or multiple horizontal transformations. अगर एक vertical हो एक horizontal हो तो horizontal और vertical का आपस में order matter नहीं करता, जो मर्जी आप पहले कर सकते हो. ठीक है? So that's the summary. That's what you do in order of transformations. Okay, so that's what we've got here. Let's look at part B. Part B में हमें क्या करना है? Equation solve करनी है. अब left side देखें, it's exactly the same as this thing. हम इसकी जगह 2 tan square theta लिख सकते हैं. And that equation becomes 2 tan square theta equals 8. इसको solve करना है theta between 0 and 180. Let's solve this. 2 goes to the other side and becomes 8 over 2. That's 4. Let's take square root on both sides. But remember, whenever we take square root, we have plus minus. So tan theta equals plus minus 2. Okay. So tan positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है. Let's find the basic angle now. Tan alpha equals to degrees use किया है वहाँ पे. Tan inverse of 2 figure out कर लेते हैं. Remember, your calculator should be in degrees mode. Tan inverse of 2, I'm getting alpha equals 63.43 degrees. This is the basic angle. Now, once you have the basic angle, now you can think of which coordinates you can be in. Since tan theta can be plus minus anything, आप किसी भी coordinate के अंदर हो सकते हो. You could be in any of the 4 quadrants. लेकिन उसमें range क्या दी हुई है? 0 से 180. You can either be here
or you can be here. ये दो possibilities आपके पास, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक एंगल देख लेंगे और सेकंड के अंदर देख लेंगे। फर्स्ट में एंगल क्या बनता है, that's just 63.43, और फिर सेकंड वाला एंगल क्या बन जाएगा, that's going to be 180 minus 63.43 degrees, and this gives us 116.57. You can just leave it like this. These are the values of theta that satisfy your equation. Okay, these are the solutions that we've got for this equation. All right, let's move on. Question number 8. We've got a GP, a geometric progression that has the first term A, the common ratio R, and sum to infinity S. So now we've got a GP, a geometric progression. First term A hai, ratio R hai, that's like standard. Sum to infinity S hai. Sum to infinity ko usne S se denote kiya hua. There's a second geometric progression. So this is the first GP. This is GP1. And there's another GP. इसकी भी फर्स्ट टाइम ए है, लेकिन इसकी रेशियो कैपिटल आर से उसने डिनोट की हुई है, और इसका जो सम टू इंफिनिटी है दैट इज 2 times s. ओके, शो दैट r equals to r minus 1. इन दोनों में रिलेशनशिप फाइंड करना. अच्छा, now what we can do is we can use gp1 here and gp2 here. दोनों में सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दें. रिमेंबर सम टू इंफिनिटी क्या होता है, सम टू इंफिनिटी इज गिवन बाय a over 1 minus r. फॉर्मूला शीट में दिया होता है इस तरह से. Let's use that formula on each of these two GPs. First में क्या हो जाएगा, a over 1 minus r, that equals s, capital S. And the second one, you've got a over 1 minus r equals 2 times s. ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई. आपको स्मॉल r और कैपिटल R में रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, एक तो यहाँ से a को सब्जेक्ट बना दो, a को एलिमिनेट कर दो, a equals s. अब या a को सब्जेक्ट बना के एलिमिनेट कर दें या s को एलिमिनेट कर दें, इट्स द सेम थिंग, एक ही बात है. दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं. मेकिंग a the subject, it becomes s into 1 minus r, and the other equation if I make a the subject, I get 2s into 1 minus capital R. Now I can equate these two. दोनों को equate कर दें. We get s into 1 minus r, that equals 2s into 1 minus capital R. Now what happens, s and s also get cancelled, and we're just left with 1 minus r equals 2 into 1 minus capital R. That's 1 minus r equals 2 minus 2r. उसने ऊपर क्या करने को कहा है, स्मॉल r को सब्जेक्ट बनाना है. So it gives us 1 minus 2 plus 2r equals small r. R equals 2r minus 1. And that's what we wanted to show there. Small r equals capital 2 into capital R minus 1. ये हमने वो show कर दिया, ठीक है? That was this first part. Let's move on to the next one. Pretty straightforward, this one as well. Now it says it's now given that the third term of the first progression is equal to the second term of the second progression. Express s in terms of a. अच्छा, तो जब हमने पहले देखा था first part, that's still valid, all of that. अब उसने एक और चीज हमें बता दी है. The third term of the first progression is equal to the second term of the second progression. Okay. We've got GP1. Remember GP1 में क्या क्या था आपके पास? GP1 में you knew you've got the first term A, you've got ratio R. ये दो चीजें इसके लिए relevant है. In GP2, we had first term A and the second and the ratio capital R. Term formula क्या होता है आपके पास? Term formula क्या होता है? यहाँ पे लिख देता हूँ. Term formula for a GP, that's given by AR raised to power n minus 1. अब इसकी जो third term है, first GP की, third term of the first progression, what is that going to be? A into R raised to power 3 minus 1, that's AR square. That's the third term of the first progression. Second term of the second progression, what's that? That's T2 equals first term A into R raised to power n minus 1. यहाँ पे R क्या है? Capital R.
n minus 1, 2 minus 1, that's just 1 AR. आपके पास ये आपकी first term, second term आ गई इसकी. Now they're saying these two are equal to each other. ये दोनों एक दूसरे के equal है. इन दोनों को equate कर देते हैं. That means AR square should be equal to A into capital R. Now what happens now? A and A get cancelled here, and we get R square equals capital R. ये हमारे पास एक और equation आ गई. एक और equation आ गई R square और capital R के दरम्यान. ठीक है, एक और equation आ गई. What can we do now? Now what we can do is we can actually use this formula that we had there. Just think about it. Capital S हमें क्या करना था in terms of A represent करना था. A over 1 minus that. Okay. हमें करना क्या है? हमें करना ये है S in terms of A represent करना. अभी तो हमने इस information को use करके एक और relationship find कर लिया. हमें find क्या करना है? S in terms of A. S क्या था? This was S. हमने यहाँ पे evaluate किया हुआ. Sum to infinity of the first progression A over 1 minus R. इसको हमने सिर्फ A की terms में लिखना है. S equals A over 1 minus R. We want this only in terms of A. Now, how can we get this only in terms of A? If we can find the value of this small r, तो वो सिर्फ A की terms में आ जाएगा. तो हमें क्या करना है? small r की value निकालनी है. कैसे निकालेंगे? हमारे पास एक equation ये आ गई है. एक equation पहले आ रही थी. R equals 2r minus 1. इन दोनों को simultaneously solve कर सकते हैं और small r की value निकाल सकते हैं. ऊपर क्या दिया हुआ था? हम यहाँ पे लिख लेते हैं दोबारा. This is one equation. There was another equation that's coming from the first part. That was r equals 2r minus 1. That's the second equation. इसके अंदर जाके इनपुट कर दें. आप कोई भी ये चीज इसमें इनपुट कर दें या ऊपर वाले नीचे इनपुट कर दें. That's your choice. नीचे मैं क्या करता हूँ? r की जगह पे I'm doing this here. I'm inputting r equal to capital R equal to r square here. ठीक है? So I get from this r equals 2r square minus r minus 1 equals 0. ये मेरे पास एक equation आ गई. I can solve this equation now. I can solve this equation now and find the value of small r. How do I solve this equation now? Let's try to solve this and see what we get from this. 2r square minus r minus 1. Can we factorize this? 2 or 1. We can use 2 and 1 here. So 2r square minus 2r plus 1 plus r, sorry, minus 1 equals 0. You have to factorization show करनी पड़ेगी. This is paper 1. It's absolutely necessary that you show this working. 2r common ले लिया. R minus 1. यहाँ से 1 common ले लिया. R minus 1 equals 0. We get two factors, 2r plus 1 and r minus 1. R equals minus 1 over 2 or r equals 1. ये दो values हमारे पास r की आ रही है यहाँ पे. ठीक है? But now let's think about this. R क्या हो सकता है यहाँ पे? उसने कुछ दिया हुआ हमें. अच्छा, R की कोई कंडीशन तो नहीं दी हुई, लेकिन सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट करता है ना इसका. सम टू इन्फिनिटी कब एग्जिस्ट कर सकता है सर? रिमेंबर द कंडीशन फॉर दैट. सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट करने के लिए, सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट करने के लिए जो रेशियो होती है वो -1 और 1 के दरम्यान में होनी चाहिए. अदरवाइज सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता. तो ये तो पॉसिबल नहीं है. R equals 1 नहीं हो सकता. You ignore this. This is not possible. Why is it not possible? Because ratio has to be between -1 and 1 for sum to infinity to exist. यहाँ पे sum to infinity की बात हो रही है. Ratio -1 और 1 के दरम्यान में होनी चाहिए. ये हमें पता है. This is the only value of r that we got then. अब इसको जाके input कर दें उसके अंदर, उस formula के अंदर. A over 1 minus -1 over 2. What do we get from that? A over 3 over 2. 1 plus 1 over 2, 3 over 2 हो जाएगा. And that gives us 2a over 3. That's your sum there. ये आपको चाहिए था S in terms of A. ये आपने figure out कर लिया. All right.
अब देखें यहाँ पे अगर आप लेट्स से आपको नहीं ये ख्याल रहता कि r इक्वल्स 1 क्यों नहीं पॉसिबल, अगर आप वो यहाँ पे इनपुट कर भी देते, अगर आप r की वैल्यू यहाँ पे 1 इनपुट कर देते, what would you have got in that case? a over 1 minus 1 हो जाता, you would have gotten a over 0 and that's undefined. You should have figured out at that point कि कुछ मसला है, ये नहीं पॉसिबल. Okay, डिनोमिनेटर में तो 0 नहीं आ सकता आपके पास, so s की वैल्यू आपके पास ये आ रही है 2a over 3. That's the sum that we were looking for. All right, that was question number 8. Let's move on to the next one. Question number 9. The diagram shows a circle with center A. It's passing through the point B. A second circle has a center B and it passes through A. Okay, so there are two circles. उनके जो centers हैं वो एक दूसरे के circumference पे lie करते हैं. The coordinates of A and B are given. The tangent at B to the first circle intersects the second circle at C and D. ये tangent आपको नजर आ रहा है, C और D पे intersect करता है दूसरे circle को. So you've got all of that shown in the diagram. A और B के coordinates भी आपको given है. Find the equation of the tangent CBD. CBD is a straight line. Straight line के लिए क्या चाहिए होता है आपको? You need two things: one point and a gradient. एक point और एक gradient. Point पता है हमें? B point lies on this line. Point तो पता है. So we have this point B. That's 3, 2. How do you find the gradient of the tangent? Tangent, the gradient is always perpendicular to the gradient of the radius. तो आप क्या करोगे? आप AB का gradient निकाल लोगे. That's the radius. Gradient of AB. Let's see what that turns out to be. 2 minus 4 divided by 3 minus 1. That's 3 plus 1. That's minus 2 over 4, which is minus 1 over 2. That's the gradient of AB. अगर AB का gradient ये है तो tangent का gradient क्या हो जाएगा? इसका negative reciprocal, because that's perpendicular to this. Gradient of tangent is going to be 2. You can write down the equation now. Y minus y1 equals m into x minus x1. Just input values. Y minus 2, that's coming from here, equals 2, that's the gradient, into x minus x1, that is 3, that's coming from here. That's the equation of the tangent that we were looking for. Isne koi specific form nahi mangi aapse. You can just leave it like this and that will be fine. You don't have to simplify this. Okay? All right, let's move on. Now it says find an equation of the circle with center B. ये जो सर्कल है इसकी इक्वेशन निकालनी है. ठीक है, अच्छा. इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए क्या चाहिए होता है? यू नीड द सेंटर. वी ऑलरेडी हैव द सेंटर. वी नीड द रेडियस. रेडियस क्या है? ए बी अगर हम लेंथ निकाल लें, दैट्स गोइंग टू बी द रेडियस फॉर दिस सर्कल एज वेल. दोनों का रेडियस तो इक्वल है. लेट्स फाइंड द लेंथ ए बी. वो फिगर आउट कर लेते हैं. ए पॉइंट क्या था? ए इज -1, 4 and B is 3 and 2. Let's find the length AB first. Square root of x2 minus x1 whole square, that's 3 plus 1 whole squared, plus y2 minus y1 whole square, that's 2 minus 4 whole square. What do we get from this? We get square root of 4 ka square, that's 16. 16 plus 4, that's 20. It's going to be square root of 20. That's the radius. Yeah, radius ho gaya circle ka. You already know the center. This is the center. B आपका center. X minus 3 whole square plus y minus 2 whole square equals square root of 20 ka whole square, which is just 20. That's your equation of the circle. ठीक है? Let's move on. Find by calculation the x coordinates of C and D. Now, what are C and D? C और D देखते हैं यहाँ पे. अच्छा, C and D are these points. This point here and this point. Now, how do you describe these points? These are actually points of intersection of the circle and the tangent. Circle के और tangent के points of intersection है. उसने first part में आपसे tangent की equation निकलवाई थी. Second part में circle की equation निकाल लिया. अब उसको simply क्या करना है? Simultaneously solve कर लेना है. ये दो equations हैं हमारे पास. दोनों equation में यहाँ पे लिख देता हूँ. Equation of tangent. Y minus 2 equals 2 into x minus 3. That was the equation of the tangent. We can simplify this, and that's going to give us 2x minus 6 plus 2
which is y equals 2x minus 4. This is the equation of the tangent. Equation of circle, what's that? We just found that here as well. X minus 3 whole square plus y minus 2 whole square equals 20. Just solve them simultaneously. क्या करेंगे? ये जो y है यहाँ पे input कर देते हैं. Y की जगह पे 2x minus 4 डाल दें. So we put y equals 2x minus 4 here. That gives us x minus 3 whole squared plus 2x minus 4 minus 2 whole square. Y की जगह पे ये डाल दिया 2x minus 4. That equals 20. Let's solve this now. X square minus 6x plus 9. That equals, no, that's plus 2x minus 6 whole square equals 20. Let's simplify this again. X square minus 6x plus 9 plus 4x square minus 24x plus 36. Take 20 to the left side as well. Minus 20 equals 0. ये आपके पास equation आ गई, quadratic equation. We need to solve this equation. 5x square, x square वाली terms ये दो ही हैं सिर्फ. X वाली terms कौन सी हैं? Minus 6 minus 24. That's going to give us minus 30x. And then the constants 9, 36, and minus 20. That's 45 minus 20, which should be plus 25 equals 0. Let's simplify. This is x square minus 6x plus 5 equals 0. Can we factorize this? We can write it as x square minus 5x minus x plus 5 equals 0. And the two factors are going to be x minus 5 and x minus 1. From this, we get x equals 5 or x equals 1. These are the values of x. What about the corresponding values of y from this? Y equals 2x minus 4. एक value आपके पास आ जाएगा यहाँ से y equals 2 into 5 minus 4. And the second is going to be y equals 2 into 1 minus 4. We get y equals 6 or y equals minus 2. So we have 2 points now. 5, 6, that's 1 point. And 1 minus 2, that's the other point. अब हम देख लेते हैं कौन सा C होना चाहिए, कौन सा D होना चाहिए. Let's look at the figure that was given. D is on the left side. इसका x coordinate छोटा होना चाहिए. D का x coordinate छोटा होना चाहिए. So this should be D here, and this should be C. C का y coordinate बड़ा है, so C ऊपर है. You can also see that there. C is above D there. So yeah, these are the coordinates of C and D. That's what we had to find here. All right. Let's move on. Question number 10. The diagram shows a sector CAB, which is part of a circle with center C. Okay, so basically, ये पूरा sector है. That's what they're talking about. एक circle से निकाला हुआ. A circle with center O and radius R lies within the sector. So we can see the circle as well, which lies within the circle, within the sector. And it touches it at D, E, and F. You can see that in the figure, where COD is a straight line and angle ACD is theta radians. जिसने आपको एक angle भी बताया हुआ है यहाँ पे, ACD here. Okay. Find CD in terms of R and sine theta. CD figure out करना है हमें सबसे पहले. What's CD? CD is basically this length. All right. How do we think about this? Yeah, so they've actually given us a hint here because यहाँ पे ये R show किया हुआ है. If you look at this triangle, that's this triangle. It's a right angle triangle because radius और tangent एक दूसरे का perpendicular होते हैं. You can look at this triangle here. Right? इस triangle के अंदर ये angle 90 है. If this angle is 90, and we know this is R, and this is theta, we can find the length OC. OC length find कर सकते हैं because OC is the hypotenuse of this triangle. Let's do that. So हम triangle कौन सी use कर रहे हैं? We're using the triangle CFO. OFC, this is the triangle. इसके अंदर theta के हिसाब से R is perpendicular and OC is hypotenuse. R over OC
perpendicular over hypotenuse, that should equal sine theta. That's what we've got. OC क्या आ जाएगा? OC is going to be R over sine theta. ये OC length आ गया हमारे पास, O से लेकर C तक. What did we want? What did we want? We wanted CD. हमें ये पूरी लेंथ चाहिए थी C से लेकर D तक. तो क्या करें, इसमें ये नीचे वाला रेडियस ऐड कर दें. दिस इज आल्सो रेडियस, राइट? तो CD क्या हो जाएगा? इट्स जस्ट गोइंग टू बी R plus R over sine theta. That's the length CD. That's what we had to do here. All right, CD length पे आ गया हमारे पास. Let's move on. Now, the second part says it's now given that R equals 4 and theta equals pi over 6. Find the perimeter of the sector CAB in terms of pi. CAB, ये जो पूरा सेक्टर है, इसका पेरीमीटर निकालना है. सेक्टर का पेरीमीटर, that means length of the boundary. ये पूरी लेंथ चाहिए. Okay. We have already found the radius of the sector. Radius मिल गया. क्या रह गया सर? Arc length रह गई है. AB arc length निकालनी है. Angle भी मैं बता दिया उसने. Let's use those pieces of information here. एक तो पहले रेडियस लिख लेते हैं. रेडियस हमारे पास क्या आया था? CD जो हमारे पास रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल. What was that? The radius of the bigger circle, that was CD, which was R plus R over sine theta. Now, rather than inputting everything in terms of R and theta right now, अब क्या करें? R और theta की values input कर लें, इसको simplify कर लें अभी से. R is 4, theta is pi over 6. ठीक है? Let's evaluate this. 4 plus 4 over sine pi over 6. Sine pi over 6 क्या होता है? It's 1 over 2. It's going to give us 4 plus 4 into 2, that's 8, and that's going to be 12. Radius आपके पास आ गया बड़े सर्कल का. In fact, sector का. This is the radius of sector, that is 12. Radius आ गया. Now we need the arc length. AB arc length. वो निकाल लेते हैं. Arc AB. Arc length का formula क्या होता है? S equals R theta. So radius times the angle. Radius कितना है? 12. Angle कितना है? Theta was half the angle. पूरा angle कितना होएगा? ये पूरा angle, it's going to be 2 times theta. So 12 into 2 times theta. That's 24 times theta. Theta की value क्या है? It's pi over 6. And that gives us 4 pi. That's the arc length AB. What's the perimeter now? Perimeter of that sector is going to be arc length 4 pi plus 2 times the radius. एक ये radius है, एक ये radius है, and दोनों को add कर देंगे. We can say 2 times the radius. That's going to be 2 times 12, and that gives us 4 pi plus 24. That's the perimeter of this sector. Okay. Now it says find the area of the shaded region in terms of pi and square root of 3. Shaded region क्या है हमारे पास? So basically क्या किया हुआ है यहाँ पे? सेक्टर में से माइनस किया हुआ है. एक तो सर्कल माइनस किया हुआ है और ये बाहर वाला पार्ट माइनस किया हुआ है. That's one way you could think about it. Another way could have been कि हम ट्राइंगल फाइंड कर लें और उसमें से ये सेक्टर माइनस कर दें. Yeah, that's going to be easier. So what I'm going to do is I'm going to evaluate the area of this triangle. Evaluate the area of this triangle. Just shade that again. इस ट्राइंगल की एरिया फाइंड कर लेते हैं. उसमें से माइनस कर दें ये सेक्टर. उससे क्या होगा? आपको हाफ ऑफ द शेडेड रीजन मिल जाएगा. Half of the shaded region, and then you can multiply that by 2. Okay. अच्छा, अब इस पॉइंट को मैं कोई नाम दे देता हूँ. ये जो दरमियान में पॉइंट है, let's call this point X. Do we know this angle? उसने यहाँ पे देखें बताया हुआ है. इसने यहाँ पे जो वैल्यूज दी हुई हैं, they are still applicable. R equals 4. देखें B पार्ट से पहले बताया उसने, तो ये B और C नेक्स्ट दोनों पार्ट्स पे applicable है. Theta is pi over 6. Okay.
if this value of theta now is pi over 6, what about this angle? ये वाला angle कितना हो जाएगा? Pi over 2 में से pi over 6 minus कर दें. I think it's going to be pi over 3, right? Degrees में सोचना चाहते हैं, degrees में सोच लें, this is 90 and then 30, बाकी 60 रहेगा. 6 degrees क्या होता है? It's going to be pi over 3. This angle is going to be pi over 3. ये angle भी आ गया हमारे पास. ठीक है? अब मैं क्या करने लगा हूँ? I'm going to find the area of the triangle and subtract from that the area of this sector. Okay? सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ? Area of triangle. Which triangle? The triangle OFC. Area of triangle OFC minus area of the sector, ये जो छोटा वाला सेक्टर है, ये वाला OFX, उसमें से वो माइनस करने लगा. What's the area of the triangle? Triangle का area कैसे आता है? दो फॉर्मूलाज होते हैं, हाफ इंटू बेस एंड डिवाइड या फिर हाफ AB sin C. लेट्स सी कि हम कौन सा यूज कर सकते हैं यहाँ पे. वी डोंट नो द हाइट, हमें ये वाली लेंथ नहीं पता, लेकिन हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि ये साइड कितनी है और ये साइड कितनी है, ये दोनों लेंथ पता है. इन दोनों को यूज कर लेते हैं और साथ में दरमियान वाला एंगल यूज कर लें. दैट्स वन आइडिया दैट यू कुड यूज हियर. हाफ इनटू r into r over sine theta, right? R is this length OF and r over sine theta, remember this is OC. OC length जो है, that is r over sine theta. वो मैं यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ. That's going to give us the area of the triangle. उसमें से माइनस कर दिया area of sector, half r square theta. Theta यहाँ पे क्या है? Theta is pi over 3. Pi over 3. This is what I have. Let's input the values. It's going to give me half r square. R is 4. R की value 4 दी हुई है. Divided by sine pi over theta की value was pi over 6. Sine pi over 6. Subtract from that half into 4 square into pi over 3. Just evaluate this. ये देखें क्या आता है. आपको pi और square root 3 terms में आंसर देना. जब भी उसने इस तरह से लिखा होता है, it's necessary to show complete working. इसको step by step करना है. Step by step करना है. Even if you're doing this on a calculator, आपने steps show करने हैं सारे. Numerator में क्या आ रहा है? 16. In the denominator we've got 2. Sine pi over 6 की value पहले लिखनी है आपने यहाँ पे. बेशक calculator से लिखें exact value, लेकिन लिखनी है वो value वो क्या है? 1 over 2. You're going to write 1 over 2 here. That from that we subtract 16 over 2 and then pi over 3. अब इसको simplify कर सकते हैं. I think there might be something wrong somewhere because हमारे पास square root of 3 तो यहाँ पे कहीं नहीं आ रहा है ना. उसने कहा square root 3 के terms में होना चाहिए. Are we missing something? Angle हमने सही यूज किए हैं. Yeah. So basically जो angle था यहाँ पे triangle के लिए हमें pi over 3 यूज करना चाहिए था. मैंने गलती से pi over 6 यूज कर लिया. This angle should have been pi over 3 here. How did I figure this out? Because उसने आंसर लिखा हुआ square root 3 के टर्म्स में आना चाहिए. Square root 3 तो हमारे पास कहीं आया नहीं अभी तक. So that means we're doing something wrong. ये angle pi over 3 था. Triangle का जो angle ले रहे थे हम. So ये sine pi over 3 is basically square root of 3 over 2. Okay, now that makes sense. This 2 and this 2 get cancelled and we have 16 over square root of 3 minus 8 pi over 3. ठीक है? This is what I'm getting. This is half of the shaded region. This is half of the shaded region. Now what I can do is I can multiply this by 2 and that's going to give me the complete shaded region. ये मेरे पास half shaded region आया.
You can write that down here. This is half of the shaded area. That's going to be this. The total shaded region कितना आ जाएगा? That's going to be 2 times 16 over square root of 3 minus 8 pi over 3. That gives me 32 over square root of 3 minus 16 pi over 3. Let me just confirm this. Divided by 3. एक तो मुझे वर्किंग कंफर्म कर लेने दें. This is Assalamu alaikum Fazain. I'm good. Area of the shaded region by square root of 3. Area of हमने triangle find किया है OFC. That's R and OC. That's R square into over sine theta. That's fine. Yeah, we missed something here. Half AB sin C नहीं किया यहाँ पे. एक और चीज भी यहाँ पे multiply होनी थी. यहाँ पे जो हम ये कर रहे हैं, we should have multiplied sine of the angle between them as well. So this is something wrong here. ये actually this is not correct. Right side वाला सारा सही था, but वो एक value हमने गलत input कर दी वहाँ पे. Sorry about that. Let's actually look at this again. Okay, how much time do we have? 43 हो गया. Let me just correct this. Area of triangle OFC, उसमें से minus करना था area of sector OFX. ये हमें figure out करना है. ठीक है, triangle OFC के area कैसे निकालें? Triangle OFC के लिए, rather than making more complicated, let's do it this way. हम क्या करते हैं? Triangle OFC के लिए, it's going to be easier to just find the length FC. FC length find कर लेते हैं पहले. ठीक है? FC length कैसे आएगी हमारे पास? हम इस पे भी trigonometry use कर लेते हैं. FC is the base and OF is perpendicular, so R over FC perpendicular over base, that should equal tan theta. So FC क्या आ जाएगा? FC आ जाएगा R over tan theta. Let's just use this. ठीक है? FC की लेंथ कितनी आ गई? FC की लेंथ हमारे पास आ गई R over tan theta. अब हम क्या कर सकते हैं? Area of triangle OFC के लिए we can use half into base into height. Half into base. अब इसमें से कोई भी बेस ले लें. R को बेस ले लेते हैं. Half into R into R over tan theta, that's FC. R over tan theta. And we subtract from that area of the sector, that's half into R square. Radius of the smaller sector, इसमें से ये वाला sector minus करना चाह रहे हैं. इसका radius कितना है R? What about the angle? If this angle is pi over 3, this angle is going to be pi, ऊपर वाला angle, sorry, pi over 6 था. If this angle is pi over 6, this angle is going to be pi over 3. Pi over 2 में से minus कर दिया. You get this. Half R square into this angle, that's going to be area of the sector. यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? When you subtract this sector from this highlighted triangle, इसमें से वो sector minus कर देंगे, आपके पास ये half of the shaded region आ जाएगा. That's what you're going to get. Half of the shaded region. And then what you can do is you can just multiply that region by 2. And that's going to give us the complete shaded region. तो यहाँ पे हम क्या करें? इससे हमें क्या मिलेगा यहाँ से? We're going to get half of the shaded region. This is half of the shaded area. That equals this. इसको simplify कर लें. R square in the numerator, R की value क्या है? 4. 4 square divided by tan of theta.
थीटा की जगह पे क्या है हमारे पास π/6 tan π/6 minus 1/2 r square again is 4 squared into π/3। अब इसमें आपको क्या करना होता है, क्योंकि उसने स्क्वायर रूट ऑफ 3 और पाई के टर्म्स में आंसर मांगा है, आपको वर्किंग पूरी शो करनी है, वर्किंग पूरी शो करनी है। तो क्या हो जाएगा 16/2 दैट्स 8 tan π/6 की जगह उसकी वैल्यू इनपुट करके दिखानी है। इवन इफ यू doing it on your calculator, you have to input that value and show that tan π/6 क्या होता है आपके पास, tan of π/6 is tan of radians में करना है, make sure that you are doing this in radians. If you remember this value, that's good, but आप calculator से भी निकाल सकते हैं, your calculator is going to give you square root of 3/3 है, वो input करके आपने show जरूर करना है, ठीक है। On the other side, you got 8 π/3. Now this 3 goes to the numerator and becomes 8 into 3 over square root of 3 minus 8 π/3. Now 3 over square root of 3, that's basically square root of 3. So 8 square root of 3 minus 8 π/3, ये आपका आ गया half of the shaded region. And now what's the full shaded region? Complete shaded region कितना हो जाएगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, because हमने क्या किया है अभी सिर्फ हमने ये एक रीजन फाइंड किया, दिस रीजन ओनली। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास टोटल शेडेड रीजन आ जाएगा। लेट्स डू दैट। टोटल शेडेड एरिया, that's going to be 2 times 8 square root of 3 minus 8 π/3, and that gives us 16 square root of 3 minus 16 π/3. That's your shaded region. ये आपके पास area आ गया. That's what we were looking for. Okay, let's move on. This is question number 11 now. It's on functions. The functions f and g are defined by f of x equals x squared plus 3 and g of x equals 2x plus 1. दोनों के domains दी हुई हैं. You first have to find an expression for f g of x. Composite function find करना है. f के अंदर आपको क्या करना है? g input कर देना. Right? You can use brackets like this. And now this becomes f of 2x plus 1. So in the function f, wherever you've got x की जगह पे आप डाल दोगे 2x plus 1, so it becomes 2x plus 1 whole square plus 3, that's fg of x. You don't have to simplify this. इसने आपको simplify करने के लिए नहीं कहा. एक मार्क का है वैसे भी. This is your result. You can just leave it like this. ठीक है? अच्छा. Now in the second part it says find an expression for fg whole inverse of x. So basically जो fg function है, ये function है, इसका inverse निकालना. And state the domain of this function as well, of this inverse function. अच्छा, हमारे पास क्या आ गया? fg of x. What's that? That is 2x plus 1 whole squared plus 3. That is fg of x. अब इसका inverse कैसे निकालते हैं? Left side पे हमारे पास पहले f of x होता था. Now this is fg of x. Doesn't make much difference. आपने सिर्फ क्या करना है? fg of x को y suppose कर लेना है. And that's going to give you y equals 2x plus 1 whole square plus 3. Okay. अच्छा, ये हो गया. अब x को सब्जेक्ट बनाना है. Remember, x को सब्जेक्ट बनाने के लिए आपको completed square form चाहिए होती है. So this is already completed square form. इसलिए हमने इसको expand करने की जरूरत नहीं है. 3 को दूसरी साइड पे ले जाएं. That gives you 2x plus 1 whole square equals y minus 3. Let's take square root on both sides. Whenever we take square root, remember we always have to put plus minus. So it's going to be plus minus square root of y minus 3. And then x equals, or 2x equals minus 1 plus minus square root of y minus 3. And then 2 goes to the other side and gets divided. We have minus 1 over 2 plus minus square root of y minus 3 over 2. ये आपने x को सब्जेक्ट बना लिया. But remember, we've got plus minus. We always have to choose here कि plus minus में से कौन सा input करना. For that, we have to think about the domain of this function. ये जो हमारे पास original function था, उसकी domain figure out करनी पड़ेगी. Okay? Composite function की domain. How do you figure that out? Remember, composite function की जो domain होती है, that's the domain of the inner function. जो inner function की domain होगी, वही आपके composite function की domain होगी. तो fg of x का inner function क्या है? G of x. G of x की domain क्या है? That is x greater than
-1/2, तो वही आपके इस कॉम्पोजिट फंक्शन की डोमेन भी होगी. Now, how do we use that? We know that x should be greater than -1/2. तो आपको यहाँ पे देखना है, प्लस लगाने से -1/2 से बड़ी वैल्यू आएगी, या फिर माइनस लगाने से -1/2 से बड़ी वैल्यू आएगी. सो -1/2 प्लस समथिंग करेंगे तो वो कुछ बड़ा होगा -1/2 से. -1/2 में से कुछ चीज माइनस कर देंगे, that's going to be smaller than -1/2. So which one of these two do we choose? We choose the plus sign there. So we have x equals -1/2 plus square root of y minus 3 divided by 2. अब इसको इनवर्स फॉर्म के अंदर लिख दें, x की जगह पे क्या कर दें, एफ जी होल इनवर्स लिख दें. So it becomes fg whole inverse of x that equals -1/2, और राइट साइड पे y की जगह पे x लिख दें, square root of x minus 3/2. That's your inverse function. एक आपको ये इनवर्स फाइंड करना था. और उसने क्या कहा है यहाँ पे, उसने कहा है स्टेट द डोमेन ऑफ एफ जी होल इनवर्स एज वेल. इसके डोमेन भी लिखते हैं. Remember, what's the relationship between domain and range of a function and its inverse? What's the relationship between domain of the original function and the domain of the inverse function, and similarly for the ranges? क्या relationship होता है? Let's write that down here. I'm just trying to make some space. What am I doing? Okay. Inverse function की domain find करनी है. Domain of fg whole inverse. That's actually going to be the same as the range of the original function. जो original function की range होगी वो इसकी domain होगी. तो आपको क्या करना है, original function की range figure out करनी. Now what's the original function? This is the original function. 2x plus 1 whole square plus 3. इसकी domain क्या थी उस original function की? इसकी domain थी x greater than -1/2. -1/2 से बड़ी कोई वैल्यू आ सकती है. ठीक है. Now if you think about this, -1/2 अंदर इनपुट करते हैं तो क्या आता है, अंदर वाला पार्ट 0 हो जाता है, एंड we're left with +3 आउटसाइड. तो बेसिकली जो इसकी मिनिमम वैल्यू बनेगी, स्क्वायर पार्ट मिनिमम 0 हो सकता है ना, बाहर उसके +3 है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की क्या होगी, इट्स गोइंग टू बी 3. और इनफैक्ट ये -1/2 इंक्लूडेड नहीं है, तो वहां पे हम क्या कहेंगे, ग्रेटर देन 3. इस फंक्शन की जो रेंज बनती है, एफ जी ऑफ एक्स की जो रेंज है, दैट इज बेसिकली ग्रेटर देन 3. ये आपके ओरिजिनल फंक्शन की रेंज है. ओके. Once you know the range of the original function, the domain of the inverse function is going to be exactly that. Range क्या बन रही थी हमारे पास, एफ जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3. ओरिजिनल इनवर्स की डोमेन क्या हो जाएगी, ये भी ग्रेटर देन 3 होगी, लेकिन जब डोमेन लिखते हैं वो होती है x की वैल्यूज. सो वी से it's going to be x greater than 3. This is the domain of this inverse function. ये आपके पास इसकी डोमेन आ गई. ऑलराइट. तो ओरिजिनल फंक्शन की जो एफ जी ऑफ एक्स फंक्शन था उसकी रेंज फाइंड की, that's going to be the domain of this inverse function. That's x greater than 3. Alright. That's part B of this. Let's move on. Now it says solve this equation, fg of x minus 3 equals gf of x. ये आपको equation solve करनी है. fg of x तो आपने already निकाला हुआ पहले. That was this. gf of x भी find कर लेता है. But for that, let's write down those functions here. f of x हमारे पास क्या था? f of x was x square plus 3. g of x was 2x plus 1. इनके डोमेन्स पे लिख लें. f की डोमेन क्या थी? It was x greater than 0. और g की डोमेन क्या थी? It was x greater than -1/2. Yeah. f g of x हमारे पास है ऑलरेडी, उसकी तो जरूरत नहीं है हमें दोबारा निकालने की. g f of x फाइंड कर लेते हैं कि मैं यहाँ बचाइए इक्वेशन के लिए. g of f of x, g के अंदर f इनपुट करना है,
that's g of x square plus 3. x की जगह पे x square plus 3 डाल दें g function के अंदर. We get 2 into x square plus 3 plus 1. That's your gf of x function. And that gives you 2x square plus 7. अब वो equation लिख लेते हैं. हमें f g of x पहले से पता था ऊपर से. f g of x क्या था? Let's write that down as well. It was 2x plus 1 whole square plus 3. 2x plus 1 whole squared plus 3, that was f g of x. Let's solve that equation now. F g of x minus 3, that equals g f of x. इसके अंदर values input कर दें. F g of x, that is 2x plus 1 whole square plus 3. And then we got minus 3, that equals 2x square plus 7. Let's expand this. इसको expand करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 4x square plus तो cancel हो रहे हैं. 4x square plus 4x plus 1, and then minus 2x square minus 7 from the other side, and that gives us 2x square plus 4x minus 6 equals 0, and that's x square plus 2x minus 3 equals 0. Now we need to solve this quadratic equation. Can we factorize this? 3 के factors 3 और 1 use कर सकते हैं. X square plus 3x minus 3 equals 0. We get two factors, x plus 3 into x minus 1. x equals minus 3 or x equals 1. ये दो values हमारे पास x की आ रही हैं. But remember functions वाले questions के अंदर we have to be really careful. Again, x की दो values आ रही हैं, x equals minus 3 and x equals 1. Let's just check वो दोनों domain के अंदर आ रही हैं कि नहीं आ रही. आप जो equation solve कर रहे हो उसके अंदर f g of x भी आ रहा है और g f of x भी आ रहा है. दोनों functions आ रहे हैं. इसका मतलब ये है ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. आपका जो पॉइंट्स है, इट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड इट शुड बी ग्रेटर देन -1/2. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए. -3 तो कोई भी नहीं करता कंडीशन सेटिस्फाई, तो ये तो पॉसिबल नहीं है. x की वैल्यू इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0. 0 से नीचे वैल्यू नहीं हो सकती है. तो ये -3 वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा? you'll have to ignore this वैल्यू. ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है. आप यहाँ पे लिखोगे दिस इज नॉट पॉसिबल. ये आपको क्लियरली इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा. रीजन लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आपने रिजेक्ट क्लियरली करना है. आपने कहना है x is only equal to 1. That's the only answer that we got for this. x equals 1. Why is this not possible? Because this is outside the given domain. ये domain में नहीं आ रही है, ये नहीं possible. x equals 1 आपका एक solution होगा इसका. ठीक है? All right. Okay, we have another question. That's question number 12. That's going to be the last one. The diagram shows a curve with equation y equals 4x raised to power 1/2 minus 2x for x greater than or equal to 0. Okay. And a straight line with equation y equals 3 minus x. ये आपको ऊपर नजर आ रही है. The curve crosses the x-axis at 4, 0. ये curve यहाँ पे इसको क्रॉस करिए and it crosses the straight line at b and c. b और c पे ये intersect करिए उस curve को, उस straight line को. Find by calculation the x coordinates of b and c. Now what are b and c? b and c are points of intersection of these two graphs. दो graphs हैं, उनके points of intersection find करने हैं. How do you find points of intersection? हम क्या करेंगे? We'll just solve them simultaneously. We've got two equations. Y equals 4x raised to power 1/2 minus 2x, and we've got another equation that's y equals 3 minus x. All we're going to do is we're just going to equate both of them. दोनों को equate कर दें. We get 4x raised to power 1/2 minus 2x, that equals 3 minus x. Let's take everything to one side. राइट साइड पे अगर ले जाएं हमें क्या मिलता है? x minus 4x raised to power 1/2 plus 3 equals 0. And now we need to solve this equation. हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? Now you see the power that we have here, the powers of x, they are in ratio 2:1. एक 1 है, एक 1/2 है. 2:1 ratio के अंदर, so we can treat it as a quadratic. हम substitution use कर सकते हैं. Take another letter, any other letter.
and use a substitution. You can say let any other letter, let's say m, that equals x raised to power 1 over 2. Okay. Now what does this become? This becomes m square. अगर x raised to power 1 over 2 हमने m लिया है तो x क्या हो जाएगा? M square minus 4m plus 3 equals 0. And now we can solve this quadratic equation. इसको factorize कर लें. M square minus 3m minus m plus 3 equals 0. We get two factors, m minus 3, m minus 3, and m minus 1. These are the two factors. Now m equals 1, m equals 3 और m equals 1. ये दो values आ गई हैं आपके पास. अब क्या करेंगे? वापस x input कर देंगे. Say either x raised to power 1 over 2 equals 3 or x raised to power 1 over 2 equals 1. Square both sides and we get x equals 9 and x equals 1. These are the x coordinates of B and C. अब देख लें ऊपर B का x coordinate छोटा होना चाहिए, C का बड़ा होना चाहिए. So we can say this corresponds to B and this corresponds to the point C. ये आपको find करना था. ठीक है, सिर्फ x coordinate चाहिए थे. अगर आपको y coordinate भी चाहिए होते, अब जाके वापस इस function में input कर देते, you would have gotten the y coordinates for them as well. Now it says show that B is a stationary point on the curve. Stationary point पे क्या होता है? Stationary points के ऊपर आपका gradient 0 होता है, derivative 0 होता है. So what we can do is we can find the derivative and then prove कि point B के ऊपर derivative की value 0 आ रही है, gradient 0 आ रहा है. ठीक है? Let's find the derivative of this function. We've got y equals 4x raised to power 1 over 2 minus 2x. ये आपका function है. Let's differentiate it. dy over dx. What does that give us? 4 into 1 over 2. That's going to be 2. X की power में से 1 minus कर दिया. Minus 1 over 2 minus 2. That's the derivative. Now let's find the value of this derivative. इसको आपने 0 से equate नहीं करना. इसकी वैल्यू फाइंड करनी है डेरिवेटिव की. एट व्हाट पॉइंट? एट द पॉइंट बी. बी के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 1 है. इसके अंदर 1 इनपुट कर दें. लेट्स इनपुट एक्स इक्वल्स 1. अब ये इनपुट करके आपको शो करना है. It turns out to be 2 into 1 raised to power minus 1 over 2 minus 2, and that turns out to be 0. dy over dx is equal to 0, and now you can say gradient जो है उस पॉइंट पे 0 है. क्योंकि उस पॉइंट पे gradient 0 है, that has to be a stationary point. ठीक है? That's what you have to prove in the second part. Let's move on to the next one. Find the area of the shaded region, and that's 6 marks. Shaded region का area निकालना. Okay, so this is the figure that we've got. We need to find the area of the shaded region. How do we think about this? सबसे पहले तो इसको सोच लें, इसको प्लान कर लें कि आपने क्या, कौन सा एरिया किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. शेडेड रीजन पे आप क्या कर सकते हो? इधर यू हैव दिस पॉइंट C. अब यहाँ पे देख लें, आपको पता है इसका x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए. दिस शुड बी 9. वी गॉट दिस कर्व. एक तो ये कर्व है. इस कर्व के और x एक्सिस के दरमियान में एरिया निकाल सकते हैं. इसके लिए हम इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं. राइट, वी कैन फाइंड दिस एरिया, दिस रीजन. ये एरिया तो आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेट करके. और फिर हम क्या कर सकते हैं? वी कैन यूज दिस कंप्लीट ट्रायंगल. ये ट्रायंगल यूज कर लेते हैं. इसमें भी अगर आप इंटीग्रेशन यूज करना चाहें कर सकते हैं. 3 minus x आपके पास हो, उसकी इक्वेशन भी है. बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस होल ट्रायंगल. ट्रायंगल में से ये जो मैंने लाइन से शेड किया है वो वाला एरिया माइनस कर देंगे तो आपको शेडेड रीजन मिल जाएगा. दैट्स व्हाट यू वांट टू डू हियर. ठीक है? ट्रायंगल में से ये शेडेड पार्ट जो मैंने किया है उसको माइनस कर देते हैं. अब ट्रायंगल के एरिया के लिए क्या चाहिए आपको? कर्व के लिए लिमिट्स हैं हमारे पास. कर्व के लिए तो लिमिट्स हैं. वी नो द लिमिट्स. दिस इज 4, दिस इज 9. तो लिमिट्स आर फ्रॉम 4 to 9. दैट्स गिवन. कर्व के लिए तो लिमिट्स आ गई हमारे पास. व्हाट अबाउट दिस पॉइंट? ओके, इस पॉइंट से हमें मिलेगा कि ट्रायंगल के एरिया क्या आता है. और C का y कोऑर्डिनेट भी हमें चाहिए और ये पॉइंट भी चाहिए. क्या कर सकते हैं? ये पॉइंट क्या आएगा? वी नो दिस इक्वेशन. इट्स 3 minus x. x की वैल्यू 0 इनपुट कर दें इसके अंदर. सॉरी, y की वैल्यू 0 इनपुट कर दें.
y equals 3 minus x है. This is the equation of the straight line. इसका x intercept कैसे निकालेंगे? Put y equals 0. That gives us x equals 3. तो ये पॉइंट के आगे आपके पास this is 3. ठीक है. अच्छा, दूसरा आपको क्या चाहिए? ये हाइट चाहिए. At this length, that's what you need. पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट है हमारे पास. पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट क्या था? It was 9. 9 इनपुट कर दें, स्ट्रेट लाइन में कर दें, कर्व में कर दें, दोनों में से आपको सेम वैल्यू मिलेगी. ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन थी. Let's now input x equals 9 here. x equals 9 इनपुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? y equals 3 minus 9, y equals minus 6. का मतलब है जो ये वैल्यू है यहाँ पे, this should be minus 6. C का y coordinate, that is minus 6. That's what we've also figured out. तो अब ट्राइंगल की एरिया आ जाएगा हमारे पास. We know this length is 6, height आपकी 6 है ट्राइंगल की, और ये width कितनी है? 3 से लेकर 9 तक. This is 6 units. तो ट्राइंगल का एरिया तो हमारे पास डायरेक्टली आ गया. Let's write that down first. Area of the triangle. Area of triangle. इसको फिर नाम दे देते हैं. Let's call this point M, and let's call this point N. So area of the triangle MNC, it's a right angle triangle. That is half into base into height. Base was 6, height was 6. That turns out to be 18. Triangle area to हमारे पास आ गया 18. Now we subtract from this. This shaded region जो मैंने line से shade किया है, इस area को मैं उसमें से minus कर दूंगा. ठीक है? How do you find this area? This is area between the graph, between the curve and the x-axis. Curve और x-axis के दरमियान में area. What's the curve now? Let's use that. Let's find the area of the curve. Area between the curve and the x-axis. With limits 4 and 9. Curve की equation क्या है? मैं formula पहले लिख देता हूँ. Area between curve and x-axis. What's the formula for that? Y dx with limits a to b. Y क्या है? Y is 4x raised to power 1 over 2. Minus 2x. Limits क्या है? 4 से लेकर 9 तक. Let's integrate it and input the limits. And that's going to give you the area between the curve and the x-axis. Okay. 4x raised to power 3 over 2. Power increase कर दी by 1. Divide कर दिया increased power से. Minus 2x square over 2. That's the integral. Let's simplify this first before we input the limits. 2 ऊपर चला जाएगा. It's going to become 8x raised to power 3 over 2 divided by 3 minus x square. And now we can input the limits 4 and 9. ये आपको limits input करके दिखाना है. Otherwise you will lose marks. आपने ये step show करना है. Substitute करनी है limits. 8 into 9 raised to power 3 over 2 divided by 3 minus 9 squared. That's the first bracket. To subtract from that, the case when we input the lower limit, 8 into 4 raised to power 3 over 2 divided by 3 minus 4 squared. Now you can evaluate these two brackets. अलग-अलग evaluate कर लेते हैं दोनों को. 8 into 27 divided by 3 minus 81. And that gives me minus 9 here. In the first bracket, subtract from that. 8 into 8 divided by 3 minus 16. The second bracket gives me 16 over 3. And that's given me minus 43 over 3. Now, why is it coming out to be negative? It's coming out to be negative because this is area below the x-axis. X-axis के नीचे वाली area ना, तो इसलिए negative आ रहा है. That's okay. आप क्या कर दोगे इसको? आप इसको positive कर दोगे. आप कहोगे area between the curve and x-axis from 4 to 9.
that is 43/3. उसको पॉजिटिव कर दिया बिकॉज वो नीचे एरिया आ रहा था इंटीग्रल का रिजल्ट आपके पास उस वजह से नेगेटिव आ रहा है, उसको आपने बस पॉजिटिव कर देना है. व्हाट्स द शेडेड रीजन नाउ? शेडेड रीजन आपके पास क्या आ जाएगा? आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. Shaded area is going to be area of triangle, which was 18, minus the area between the curve and the x-axis. Just evaluate this and see what that gives you. 18 minus 43 divided by 3, and that turns out to be 11/3. You can just leave it like that if you want. Or you can see usne exact nahi kaha yahan pe. Yes. Or you can write 3.67. 3.7 नहीं लिखना, 3.67 लिख सकते हैं. तो 3 significant figures. That's your final result. This is the area of that shaded region. All right, so that's what we had to do in this part, and that completes our paper. So this paper had 12 questions in total, but overall, it was an okay-ish paper. It's not too difficult. कुछ questions दरमियान थोड़े से tricky थे. For example, functions वाला question, जहाँ पे आपको डोमेन्स देखनी थी, बस बेसिकली ट्रिकी पार्ट इसमें क्या था, आपको ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यूज वैलिड हैं, कौन सी वैल्यूज नहीं वैलिड, considering the domain that's given, but otherwise it was pretty doable. So that's it on this paper. This was October 2020, paper 1, variant 1. So that's it for today. In our next session, that's going to be the day after tomorrow, हम इंशाल्लाह 4th May को बेसिकली हम क्या कर रहे होंगे, जो बाकी दोनों पेपर्स हैं अक्टूबर नवंबर के, उनमें से सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे होंगे. विल हैव वन सेशन इन दैट, एंड देन इन अनदर सेशन जो मई जून 2020 वाले पेपर्स हैं, उनमें से भी हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो मुश्किल वाले क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रहे होंगे. वी आर नॉट गोइंग टू बी डूइंग कंप्लीट पेपर्स नाउ बिकॉज़ वी जस्ट हैव वन मोर डे टू गो. कल हमारी क्लास नहीं होगी ईद वाले दिन. परसों इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे हम सारे पेपर्स से, जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं 2020 वाले पेपर्स में से, वो हम इंशाल्लाह 4th को discuss करेंगे. We may have a couple of sessions on that day, inshallah. All right, that's it for today. I'll see you again in the next session on 4th. All the best for your preparation. Those of you have your chemistry exam coming, all the best for that as well. And Eid Mubarak. Allah Hafiz.